பாஜக மூத்த தலைவர் சுதீந்திர குல்கர்னி மீது கருப்பு சாயம் பூசப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார் குல்கர்னி. அது நேரடி காட்சிகளை பார்ப்போம். Very simple language. Whether you call it Urdu, Hindustani, Hindi, whatever that language is, it's a unifying factor. It brings the people of South Asia together. So these are all the reasons why I wish to come to Mumbai. It's the commercial capital of India. It's a very, I would say, an inclusive city. And as a political worker, I recognize the right of people to protest. I have myself been to prison many times. I have faced police lathi charges. I have faced tear gas. I know what political opposition is, but I've always understood that as long as it is peaceful, it's justified. It is inherent in the constitution of Pakistan, India, and of other great democracies that you have a right to protest. But what's happened to Mr. Kulkarni is, I think, beyond that legitimate right. Why have I come here? There's another reason. I have seen how quickly it is possible to change people's perceptions. The peace process started with the famous visit of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee to Islamabad, when the joint statement between Pakistan and India was issued. It was the joint statement of January 2004. After that, it was all the way, going forward. Mr. Vajpayee was followed by Dr. Manmohan Singh, and he, with great diligence, carried forward the peace process. And in fact, it was during his tenure that we were able to achieve so much that you will find in this book. I think it was the most productive peace process, starting from Mr. Vajpayee's period to the time that I left office and Dr. Manmohan Singh was still Prime Minister. It was the most productive peace process between the two countries since independence. As far as the perceptions of the people are concerned, I'd like to share with you how quickly they can be changed. The process, I said, started in 2004. I don't know, a couple of years later, whenever, there was a cricket match in Lahore. Matches, as you know, are substitutes for battlefields, particularly if they are between India and Pakistan. Only the other day, you saw what happened in a match between India and South Africa. But Pakistan and India have a special type of, they arouse a special type of fervor. But can you believe it, that India won in Lahore, and the young boys and men of Lahore clapped India, cheered India, and ran across the field with Pakistani and Indian flags. What does it tell you? Don't ever estimate the intelligence of the ordinary people. Once they are given a positive impetus, a positive leadership, a positive message, they are not inherently stupid. So I have great faith in the common man in Pakistan and India. And I want to share my story with the people of Mumbai. And I'm particularly grateful the way this book was received in India and the way it was launched. Former Prime Minister Manmohan Singh was there. If Mr. Vajpayee's health had been good, I would have invited him. But instead, he was very ably represented by Mr. Lal Krishna Advani, who's a great friend of Mr. Kulkarni. In fact, I invited Mr. Lal Krishna Advani to Islamabad, and he came with him. And it was during that visit that Katas Raj temple was restored, and we used that opportunity. It's a historic temple, and we used that opportunity for Mr. Advani to inaugurate that temple. And therefore, I have many reasons to be here, and I'm open to any questions that you may have. Before you begin, friends, we are very happy to have with us Shri Dilip Padgaonkar, one of the panelists this evening. Dilip ji, dhanyawad. Very warm welcome to you to your Observer Research Foundation. मी काय म्हणतो, सकाळच्या घटनाक्रमाबद्दल आपण नंतर बोलूया. मी आहे इथे. हा जो कार्यक्रम आहे, कसुरी साहेब पहिल्यांदा आलेले आहेत, त्यांच्याबरोबर तुम्ही संवाद साधा आणि नंतर आपण बोलूच. Yes. Well, obviously I'm concerned about what's happened to him, but I'm an old political worker. As I said, I spent time, 6 months in Bhagat Singh's cell, which is a condemned prisoner cell, before he was sent to death.
So I'm used to these things, but all I say is it is their right to protest. I recognize that right as long as it is done in a peaceful manner. What do incidents like this? What do incidents like this the peace process? No, it doesn't. I am not depressed by things like this. I know there are people in Pakistan, there are people in India who do not wish to have good relations between Pakistan and India. But I also know that the overwhelming majority of people in Pakistan, and there have been survey after survey, who wish to have good relations with India. And what is the proof? India has never been an election issue in Pakistan, at least not in the last 3 general elections. So I can say conclusively that the ordinary people of Pakistan wish to have good relations with India, and on the basis of my experience, I can say, which I said in my remarks earlier, that do not underestimate the common sense of the people of Pakistan and India. If you are able to inform them rather than disinform them, people will change their minds. आपकी मुंबई इस यात्रा के दौरान क्या संदेश दुनिया भर में जाएगा और क्या संदेश लेकर आए हैं मुंबई में, और इस तरह की घटनाएं होने के बाद आप मेरा मुंबई आने का एक मकसद था, और जिस संदेश यानी पैगाम ये है कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि पाकिस्तान और भारत, मैंने अपनी किताब में लिखा है, 9 मरतबा या जंग कर चुके हैं, जंग के करीब पहुंच चुके हैं, जंग के दहाने पे आ चुके हैं। और फिर मैंने उसमें ये बताया, ऐसे मुल्क जब इनको पॉजिटिव लीडरशिप मिले, जब अवाम को एक मुस्बत पॉजिटिव पैगाम दिया जाए, तो कितनी जल्दी हालात बदल जाते हैं। और 2004 में जनाब वाजपेयी तशरीफ लाए इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद डिक्लेरेशन हुआ, जॉइंट स्टेटमेंट हुआ पाकिस्तान और इंडिया का। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम बने, जब वो कांग्रेस की पार्टी के हेड थे और इलेक्शन कांग्रेस जीत गई। और मैंने अपनी किताब में डिस्क्राइब किया है, पहले हमें शक था, हमें अफसोस, हम तो चाहते थे बीजेपी जीते, क्योंकि हमने बीजेपी के साथ प्रोसेस शुरू किया था। हमें यह डर था कि कांग्रेस पार्टी शायद उसको ओन नहीं करेगी। हमारे पाकिस्तान और इंडिया में बदकिस्मती से होता ही है कि कोई पार्टीज ऑपोजिशन में कुछ करती हैं और गवर्नमेंट में कुछ। तो मुझे ये डर था कि इनके साथ तो मैं बात कर चुका हूं। ब्रजेश मिश्रा साहब ने मुझे लाहौर में कहा था कि 6 महीने में मसला कश्मीर हल करेंगे। भाई 6 महीने में कैसे करेंगे? आपको पता था कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, हमें पता था कि हिंदुस्तान की क्या पोजीशन है। ब्रजेश मिश्रा एक एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, एक एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट थे, वो कुछ सोच समझ के ही कह रहे थे ना, 6 महीने। और ये उस वक्त उन्होंने कहा था जब एक बैक चैनल शुरू भी नहीं हुआ था। वो मुझे लाहौर में मिले, बर्लिन में मिले, दिल्ली में मिले। फिर दिल्ली में जब वो नहीं रहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और मैं फॉरेन मिनिस्टर था, तो मिश्रा साहब ने मुझे ये खुद कहा, इससे आपको पता लगेगा कि उस वक्त की बीजेपी की लीडरशिप की क्या सोच थी। उन्होंने कहा, कसूरी साहब ये सारे मसले हल होंगे, और सियाचिन पे, क्योंकि हमारा एतराज था कि क्यों हिंदुस्तान की फौज सियाचिन आई है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सियाचिन से जो हमारी फौजें नीचे उतरेंगी तो एक पॉजिटिव सिग्नल पाकिस्तान आर्मी को भी जाएगा और दोनों फौजों के दरमियान जो दुश्मनी है वो कम होगी। मैंने उनकी बात से एग्री किया। उसके बाद मनमोहन सिंह साहब आए, उनके नीचे डिक्सेट साहब थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी ये कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई। उन्होंने भी मुझे प्राइवेट, जब पहली दिल्ली की विजिट थी, उन्होंने कहा, कसूरी साहब लेट्स थिंक ऑन कश्मीर आउट ऑफ द बॉक्स। तो मुझे क्या समझ आया कि जो बीजेपी सोच रही थी वही कांग्रेस सोच रही है। आउट ऑफ द बॉक्स का तो ये होता है ना कि जो आपकी एंट्रेंच पोजीशंस हैं आप वहां से हटें, जो फिक्स्ड पोजीशंस हैं वहां से हटें, जो हार्ड पोजीशंस हैं वहां से हटें और कोई ऐसा रास्ता ढूंढें। हमारे लिए यही चैलेंज था कि एक ऐसा हल ढूंढें जो कश्मीरी भी जिस पे राजी हों, उनकी एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता हो, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों उसको मान जाएं। देखने में नामुमकिन था, हमारी ऑपोजिट पोजीशंस थी, जंगें कर चुके थे, 1 मिलियन सोल्जर्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिगेस्ट मोबिलाइजेशन आमने सामने आ चुके थे। क्या हुआ? 3 साल में, सिर्फ 3 साल में हालात ऐसे बदले कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम जब लाहौर में जीती, और क्रिकेट के मैच पाकिस्तान इंडिया के छोड़े, साउथ अफ्रीका और इंडिया का आपने देख लिया कैसा मैच हुआ था अगले दिन। पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म होता है। इंडिया जीता लाहौर में, कोई सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं हुई,
मेरे हिंदुस्तानी दोस्त थे, वो निकल नहीं रहे थे। वो मैंने कहा तुम घबरा के देखो, ग्राउंड में देखो क्या हो रहा है। वो हैरान हो गए कि ग्राउंड में न सिर्फ के इंडियन टीम के लिए तालियां बज रही थी, पाकिस्तान और भारत के झंडे लेके नौजवान लाहौर के स्ट्रीट में ग्राउंड में भाग रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ कि लोग बेवकूफ नहीं है। डोंट अंडर एस्टिमेट देयर इंटेलिजेंस। लोग आसानी से समझते हैं, नेता उनको सही लीडरशिप दे तो वो सही रास्ते पे आ जाएंगे, और भड़काना चाहे तो भड़क भी जाएंगे। तो मैं वो शेयर करना चाहता हूं एक्सपीरियंसेस जो मैंने दिल्ली में किए, कराची में किए, कल शाम को चंडीगढ़ में किए, वो CRRID वहां है। तो मेरा मकसद ये, जितने छोटे अरसे में मैं जितनी जगह पैगाम पहुंचा सकता हूं, क्योंकि मैंने काम किया है भारत और पाकिस्तान को करीब लाने के लिए, सिर्फ उस वक्त नहीं जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, बल्कि उससे बहुत पहले जब गुजराल साहब ने और मैंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक दरख्त लगाया था पाकिस्तान और इंडिया के अमन के लिए। वो तो बड़े मेरे बुजुर्ग थे, मेरे वालिद के दोस्त थे गुजराल साहब, लेकिन उन्होंने मुझे, उनकी शफकत थी कि हमने इकट्ठा लगाया था। मुझे उम्मीद है वो दरख्त बहुत बड़ा हो गया होगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये मुमकिन है कि दोनों मुल्कों में मिसअंडरस्टैंडिंग। பாகிஸ்தானின் முன்னாள் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் குர்ஷித் கச்சோரி எழுதிய புத்தகத்தை மும்பையில் வெளியிட முடிவு செய்திருந்தார் பாஜகவின் தலைவர் சுசீந்திர குல்கர்னி. இவர் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலிருந்து பாஜகவிற்கு வந்தவர். இன்று அந்த புத்தகம் வெளியிட இருந்த நிலையில் சிவசேனா தொண்டர்கள் அவர் மீது கருப்பு சாயத்தை பூசியுள்ளார்கள். இந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களுக்கு அவர் அளித்த விளக்கத்தை பார்த்தோம்.